Hi. How are you guys? Hi, Disha. Hi, Vaani. Hi, Hindol. How are you? Hi. नमस्ते Hi. सत श्री अकाल या So, हाय guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऑफ सितंबर. Sorry for being late by I think 6 minutes. Rishikesh is saying 200K soon. Yes, guys, जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को और 2 लाख सब्सक्राइबर करवा दो. एंड 100K ऑन इंस्टा के लिए गोवा का क्या हुआ? Were we guys going to गोवा? मेरे को किसी ने क्यों नहीं बताया ये क्या चल रहा है? ये हिंदौल ने कहीं तो प्रॉमिस किया खुद ही विदाउट आस्किंग यू. आई तो अच्छा Why do you बता think दो. Insta has been doing so हिंडोल well? मेरे को भी लेके चल लो यार. ये मैंने अपने Yeah, आप को प्रॉमिस नहीं किया होगा ये मैंने किसको प्रॉमिस कर दिया ये बट या nice. Uma just became a member. Uma is our godfather. She just renewed the membership. Thank you so much, Uma. Is there any stream on किताबी कैबिन्स tomorrow? कल एक बहुत नई सीरीज चालू हो रही है किताबी कैबिन्स पे, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम उसकी, and it is going to be a lot of fun. So yes, we will talk about it. But सबसे पहले we are going to discuss the best of September. और इन अदर वर्ड्स हम आज जवान की बात करने वाले हैं. सो बहुत सारी और भी रिकमेंडेशन हमारे पास, बट मैं इनफैक्ट अभी मैं आधे घंटे पहले आया हूँ थिएटर से जवान देख के. सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी फ्रेश. एंड क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा डिलेट चल रहा था, एंड बट आई वाज लाइक स्ट्रीम से पहले देखनी है, सो आई जस्ट लाइक वॉच्ड इट अभी. एंड लेट्स गो, लाइक स्टार्ट करते हैं. मेरे को हिंडोल का तो थोड़ा सा आइडिया है कि हाउ ही लाइक्ड इट. आई वांट टू नो दिशा एंड वानी गाइस, हाउ डिड यू गाइस लाइक जवान? Disha, why don't you start? Okay, so I'm trying to redeem myself from the last time. You remember we had a SRK stream and I was Yeah. quiet the entire time because and I made the mistake of actually saying it out loud ki I am not an SRK fan as such. But I see हाँ. potential in myself. I know ki I can be. If Good I'm thing. like introduced to him properly. Uh, I went with a lot of excitement. I really liked the first half. I didn't like the second half so much, but हाँ. I loved it. I loved being a part of it. Um, wasn't a good film, but I had a lot of fun. Okay, so Disha thinks Jawan wasn't a good film, but it was a lot of fun. Hey, I'm और trying to redeem. Didn't you hear what नहीं I said? the actual headline is Disha said it's not a good film end I didn't end of say. sentence गाइस हमें चैट में बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी लाइक Okay, जवान. wait. I want to speak more before you yeah take this away हाँ. from me. I feel like the starting, where the start of it till the, I want to say the train robbery, it ends. I love that the intro, especially. I love that so much. The remember the intro scene in which एक सेकंड, ट्रेन रॉबरी. एक सेकंड, आप डिड यू वॉच द ट्रेन रॉबरी? कौन सी हुई थी यार? It's robbery. metro No, train. sorry, the Met- train the heist. I metro don't know what to call train. it. Yeah. हाँ, वो शिट, मेरे को लगा ट्रेन रॉबरी. हाँ, मेट्रो हाइस. या द Yeah, मेट्रो metro. वाला पूरा थिंग, Yeah. चकाला तक द जर्नी टू चकाला. हाँ. Yeah. हाँ. So I love that the momentum throughout that, like that one uninterrupted sequence. That to me was an entire sequence. It was beautiful, and I did not look away even for a second. And I love the introduction so much. It was a proper Yeah. Bollywood superstar introduction. It was very worthy of SRK. So I love that. I really tried to enjoy the second half, but I couldn't. I tried so hard. I was very confused about the. Can we get a little controversial? I don't want my statements to get taken Please, away. let's do it. Let's do it. 107 people are watching us. 400 करते हैं जल्दी से. Yeah. Yeah, but like I just read the messages I sent to my friend from the theater, who is a very big SRK fan, and I remember I was saying ki I really like the first half, but I'm getting kind of annoyed with all the whole female Avengers concept, and this is one of the things Hmm. feminism has ruined. Oh. You're Hmm. supposed to laugh. Thank you. Oh my God! बहुत सही, बहुत सही, No, बहुत but I सही. actually agree with Disha. Like, I did not like the movie. I loved Shah Rukh Khan. I really Oh, liked Deepika guys. Padukone. But that's because वो by default है. But I did not like the movie.
I was Oh. disappointed. And were we supposed to mass hallucinate that the old and the young SRK looked the same? Oh, the I old ये didn't तो know. SRK ये तो was ये तो इसमें तो really good मेरा रैंट looking. सुनना guys. Okay, I have okay like The but like old SRK was so good looking. So हाँ. good. Yeah, he was. And the young SRK, what do you think his age was supposed to be as per the film? Because I think दिशा Late 20s. Late literally 20s. मेरे को ये जानना है Late seriously. 20s, early 30s, I think. Yeah. So मेरे को ये इस बारे में बात करनी है एक बार लाइक थोड़ा थोड़ा कंसेंसस मिल रहा है हिंडोल आप क्या बोलना चाहते हैं नहीं अब मैं जिस ट्रेन पे जाना चाहता था उस पे रॉबरी हो गई है तो अभी आई डोंट हैव थिंग्स टू से आई थिंक चैट पे भी किसी ने लिखा है कि हाँ सो द थिंग इज दिस इज अ प्रॉपर लाइक तमिल मूवी लाइक मैंने आई वॉच्ड इट ट्वाइस एंड आई वॉच्ड इट फर्स्ट टाइम इन अ मल्टीप्लेक्स एंड उसमें the audience was quiet the entire time except like barring one scene where everyone clapped when someone makes a cameo तो अब तो देख ही लोगे when Sanjay Dutt comes on screen that's अरे when यार पूरा everyone फुल cheered स्पॉइलर है हाँ ये हाँ and people were like full going critical कि अरे ये सीन में ये लॉजिक नहीं है ये नहीं है हाँ whereas I just wanted to cheer मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लॉजिक दो नहीं दो जो करो I wanted to be manipulated I wanted to be just cheer for the movie and like it became awkward so then I watched it again in a single screen and वहाँ then मैंने सारी भड़ास निकाली अपनी so the thing is like I don't think you should go in expecting कि हाँ भाई चलो कुछ आज देखने मिलेगा स्पेक्टिकल आई टोल्ड वैभव ऑल्सो इट इज लाइक अटेंशन डेफिसिट फिल्म मेकिंग हर 5 मिनट में फिल्म का टोन चेंज हो जाता है कि पहले ऐसे फुल मतलब मनी हाइस्ट हो रहा है उसके बाद फिर फार्मर का वो इमोशनल बैक स्टोरी आता है उसके बाद देन सडनली इट बिकम्स लाइक अ फैमिली फिल्म देन सडनली इट बिकम्स अ रोमांटिक फिल्म तो वो है तो तो या अब मैं एक बार कुछ ऐड करना चाहता हूँ मेरी बहुत ज्यादा मेरी आधे घंटे की अभी पुरानी देखी हुई पिक्चर है सो मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ आई थिंक जवान इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ 100 एड्स एवरी सीन इज एन एड मैं ध्रुव के साथ गया था देखने और मैंने ध्रुव को एक मोमेंट बोला इफ यू लुक एट इट ना ध्रुव इन सम वेज इट्स अ सफोला का एड क्योंकि मतलब जस्ट बी विद मी गाइस क्योंकि जैसे उन्होंने स्लो मोशन किए हैं वो ड्रॉप्स के क्लोजअप दिखाए हैं और वो मतलब ऐसे ऑयल के क्लोजअप आते थे आई डोंट नो मतलब ये मैं काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ या बुराई भी कर रहा हूँ बट इट वाज जस्ट एड आफ्टर एड आफ्टर एड जो आप कह रहे हो हर 5 मिनट में टोन चेंज हो रही है बिकॉज दे आर लाइक if you do it right like sometimes they are short films in themselves but यहाँ पे ads थे तो short film और ads में difference ये है कि let's say कि if it's a film is a combination of a lot of short films तो वहाँ पे story बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे मेरे को literally ये हुआ था कि the big reveal in the first half when we get to know the father is coming मैं एकदम से ऐसा हो गया था I asked like Dhruv कि aren't they the same people he's like no ये पापा है तो मैंने कहा इसका बेटा कौन है इसने कहा ये है मैंने कहा बट मेरे साथ पूरी पिक्चर में प्रॉब्लम ये थी द यंगर शाहरुख खान looked very old to me so Yes. when the reveal came that old is this young is this but I'm like everyone looks old to me so who is supposed to be young and how is this person the son of this person it like मैं बहुत ज्यादा मैंने फिर इंडोल को इंटरमिशन में मैसेज किया Sometimes कि you have to leave your brain at home when you come to I watch a know movie. मेरे so साथ much. But this is not leaving your brain at home. You have to remove the brain. You have to make it hemorrhage and then come and watch because it was such a good film. I Why couldn't they wouldn't just be like that this one politically tiny thing? correct. या और हिंडोल ने फिर मेरे को बोला जस्ट सरेंडर टू द फिल्म क्योंकि इंटरमिशन में Yeah. ये मेरे को अच्छी नहीं लगी कि आप सरेंडर कर दो बट मैंने कहा यार ये मेरे को चमक ही नहीं रहा ये पापा बेटा कैसे है मैं बहुत ज्यादा कोशिश Did करी you That's what also I think they did were twins? हाँ नहीं Did सो you मैं इसके एकदम ऑपोजिट टैंजेंट पे चला गया था मुझे लगा 3 शाहरुख खान है आई टेल यू व्हाई मेरे को भी लगा 3 शाहरुख खान है मेरे को भी लगा 3 Right. नो बिकॉज इसी डायरेक्टर की एक फिल्म है मेरसल विच इज विद विजय उसमें 3 विजय हैं उसमें पापा विजय होते हैं और उनके ट्विन्स होते हैं दो एक मजिशियन होता है और एक पुलिस वाला होता है दोनों मिलके फिर विलन से लड़ते हैं तो मुझे लगा सेम प्लॉट होने वाला है यहाँ पे कि जो ट्रेन रॉबरी कर रहा है वो एक शाहरुख खान है जो नयनतारा के साथ रोमांस कर रहा है वो एक और शाहरुख खान है और फिर इंटरवल पे प्रेस्टीज होगा उसके बाद फिर पापा शाहरुख खान आएंगे तो मेरे को वो लगा था बट देन दे रिड्यूस्ड इट लाइक एक प्लॉट उन्होंने कम कर दिया वहां से या वानी I don't know why like Hindol मैंने वो movie नहीं देखी है but for some reason even I had that feeling कि ठीक है there will be 3 Shah Rukh Khans but like I think I've cracked how to watch a Hindi film or Bollywood movie
because Masala movie. because I didn't think for 1 second ये उसका बेटा कैसे है, because I was Yeah. like ठीक है, it's just they don't know when to retire. Yeah. But like you called it a Hindi movie. I would say कि it was a Tamil movie dubbed in Hindi. Yeah, क्योंकि yeah, Hmm. मुझे तो वही feeling आ रही थी पूरे time कि ये Yeah, अभी इसमें आप Setmax का logo लगा दो, and I was like, yeah, this is perfect. This makes sense. So, yeah, that is something that was bothering me so much, is because I have loved, like, I was comparing it a lot to Shivaji the Boss, and I was just Yeah. thinking, ki, like, this, I love Shivaji the Boss, and this could have easily been that. Why didn't they fully lean into it? Why were they trying to do so many things at once, Yeah. Right. और हिंडोल मेरे को एक और चीज लगी कि द ओल्ड शाहरुख खान लाइक रिमाइंडेड मी ऑफ कमल हसन फ्रॉम विक्रम. Yeah. लुक भी वैसा था, वो सिगार जैसे Yeah. स्मोक कर रहे हैं वो भी वैसा था. देयर वाज सो, और उसका जो एक वो जो जो लाइक द डॉर्फ लाइक विलेन, वो भी हाँ. दोनों फिल्म्स में था. विक्रम दोनों में भी. में common है. Yes. हाँ, जिसमें Yeah. इसको वो टैबलेट खिला देता है विजय सेतुपति. हाँ. सो And in fact, वो जो नाम है विक्रम राठौड़, so that comes from a राजामौली फिल्म जो जिसका रीमेक हुआ था राउडी राठौड़ में. तो उसमें भी या इंटरवल में विक्रम राठौड़ वही जो सेम वेपन लेके इंटरवल में एंट्री करते हैं. तो मतलब ये एटली या का लोगन भी लगा था. हाँ. कंट्रोल भी फिल्म मेकिंग है उसका थोड़ा. Yeah. Karun is our new godfather and he's saying he reminded me of Logan. Nice. Animal teaser की भी हम बात करेंगे कुछ देर में. Like we Hmm. have to get to that also. But like मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. मेरे को पिक्चर की एक्शन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. If correct me if I'm wrong, but does this film have the same like action director as Pathan? I I don't think so. मेरे को They किसी ने have बताया तो अभी okay. रिसेंटली कि दोनों का एक्शन, और क्योंकि मेरे को पठान का भी एक्शन बहुत अच्छा Hmm. लगा था, इसका तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है. मतलब द Hmm. फिनेस व्हिच इज देयर, यहाँ मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा ये वीएफएक्स है, ये ग्रीन Yeah. स्क्रीन है. आई बॉट एवरी एक्शन सीन. Yeah. बट मेरे को वो समझ आया कि एकदम से फास्ट करके स्लो मोशन करेंगे, वही अगेन सफोला एड वाली चीज कि एकदम से आप स्लो मोशन कभी भी आ जाएगा. राइट. लेकिन अगर दीपिका पादुकोण चल भी रही है तो एकदम से स्लो मोशन में वो चीज आ जाएगी कि जहां पे अननेसेसरी स्लो मोशंस. बट मैं रिदम में बैठ गया था उन एक्शन सीन्स की. तो ओवरऑल द एक्शन सीन्स रियली रियली वर्क फॉर मी, बट स्पेशली द फर्स्ट सीन. एंड Hmm. मेरे को ये भी लगता है कि आई वॉजंट एबल टू डाइजेस्ट हाउ दिस इज नॉट एन एडल्ट फिल्म, क्योंकि बच्चे जैसे मर रहे थे इस पिक्चर में. पर्टिकुलरली वो एक जहाँ पे दे आर लाइक swallowing their own saliva इन फर्स्ट सीन, जहाँ पे बच्चों को गोली मारी जा रही है. Hmm. एंड काफी ज्यादा मेरे को उस हिसाब से गोरी लगी. या तो मैंने कुछ मिस कर दिया पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में, बट लेटली आई हैव बीन फीलिंग इट अबाउट अ लॉट ऑफ फिल्म्स कि व्हाई इज दिस नॉट एन एडल्ट फिल्म. और Yeah. मेरे को इसमें पर्टिकुलरली लगा बहुत ज्यादा खून खराबा था. Hmm. एंड एक दो डेथ्स देख के मेरे को लगा कि यार दिस इज नॉट. और मेरे मेरे हॉल में तो 5-6 छोटे बच्चे रो रहे थे. आई एम नॉट सेइंग वो मूवी देख के रो रहे थे, बट एटलीस्ट देयर वर 5-6 किड्स हु वर क्राइंग. सो मेरे को बहुत ऐसे टेंशन हुई कि यार ये तो ज्यादा. So I went नहीं नहीं alone. अच्छा वायलेंस दिखाओ बच्चों को. You need to prepare them for life. Yeah, I went to watch the movie by myself at 7 in the morning, and वहाँ पर I realized that, because I was initially surprised कि सुबह 7 बजे कौन देखने जाता होगा, the hall will be completely empty. But there were parents with their kids, little ones, and the guy sitting next to me, it was a couple, and उनका 2-3 साल का, मतलब no wait, when do kids start speaking? 3 at 3, no? Or he was probably in preschool or हाँ. something like that, and he was asking stupid questions at every time. वो गन से मारा, इसने गन से क्यों मारा? Like, इसने वहां क्यों मारा? He has a follow-up question for everything. So I don't know. Yeah. Like This my is why mom बच्चे said, मरने prepare them चाहिए. for the worst. और मेरे को सबसे ज्यादा अननेसेसरी लगा वो जो संजय दत्त और वो दोस्त निकलते हैं एंड में. मैंने कहा Yeah. टोटली अननेसेसरी, ये तो क्या जरूरत थी No, यार इसकी. that was a redemption for रावण कि रावण ने जो गन फैलाई थी पहले 10 मिनट में उसका ये वो था कि सॉरी. या I बट did. लाइक Hindol एक्शन. had told me stay for the post-credit scene, and I anyway would have stayed, but I was like, this wasn't worth it. हाँ मतलब ऐसे चलते चलते ठीक है, अच्छा दोस्त बन गए, चलो कुछ भी है चल रहा है. एंड व्हाट डिड यू I लाइक know समवन. that Hindol या watched the movie twice. So did you Yeah. notice something the second time that you didn't the first time?
I noticed a lot of like flaws, editing mistakes, सब कुछ है. But like I don't give a shit. मैं उसके लिए जा ही नहीं रहा हूँ. See, मेरा ध्यान ऑडियंस पे ज्यादा था. Like लोग react कर रहे कि नहीं कर रहे. And जो मेरा like overall problem with the same thing, I was also thinking कि why Shivaji the Boss works, why any Shankar film works, but not this film, because उसमें एक ही issue होता है and उसी को वो लोग पूरा address करते हैं. शिवाजी द बॉस में करप्शन है, वो एंड में सॉल्व कर देता है करप्शन. यहाँ पे फार्मर सुसाइड है, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर नकली गन वाला प्रॉब्लम है. तो ऐसे मतलब एंड फिर शाहरुख खान का मोनोलॉग भी है कि सही लोगों को वोट दो. तो उस पे भी हम आएंगे, मोनोलॉग पे भी हम आएंगे. तो वो सारी चीजें थी. आई थिंक like the farmer thing I completely bought. मैं वैभव को भी बोला था, like I was into it, I was actually crying in that scene. And then when the second one happened, the hospital scene happened, then I like यार ये मेरे को वापस मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैं नहीं, I'm not falling for this again. तो वो बट सीन मेरे था. को तो दोनों में रोना आया था. लाइक मतलब मैं रोया. Yeah. आई थिंक आई डिड क्राई इन पठान. आई डिडंट क्राई इन जवान. लाइक मेरे को ये आई हैव अ वेरी clear like recollection of this, but I would say Jawan is a better directed film than Pathan. Yeah. I would like definitely a better directed film. But I also want to ask in chat, whom do you think was a better villain, Vijay Sethupathi or John Abraham? Vijay Yeah. Sethupathi from Jawan or John Abraham from Pathan? What do you guys Not think? in real life. Yeah. Yeah. What do you guys think? मुझे इतना मजा नहीं आया in his हाँ. performance. Like usually South Yeah. के villains इतने they are so quirky and they are so Yeah. unique. And I feel Hmm. like the whole like bald SRK had much more personality than the villain. I Yeah. think. Hmm. And Yeah. also ये I would also blame विजय सेतुपति for this कि जब आपके फिल्म का टोन यहाँ पे है तो why are you performing here? मतलब Yeah. वो आपने बहुत obviously सटल खेल. He was हाँ being very subtle. Like वो बहुत ही जैसे इंडी फिल्म के नहीं बट वो जैसे. ठंडा लग हाँ रहा था. It didn't feel subtle. yeah. हाँ. Like I So wasn't scared मतलब of him. yeah, Yeah. and एटलीव की फिल्मों में हमेशा विलन खराब रहता है. तो मतलब आई डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन एनीवे. बट लाइक इतना तो आप अंडरप्ले मत करो ना जब ये आपके ये सामने बड़े हीरो है. ये विजय सेतुपति का ये भी हो रहा है कि द स्टफ ही इज डूइंग इन हिंदी. बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने फर्जी भी देखा. तो मतलब इज इट आल्सो लैंग्वेज बैरियर आई कि या इट कुड बी क्योंकि अंडर प्लेइंग वर्क्स इन फर्जी क्योंकि टोन ही वही है. बट जवान का टोन आप देखो ना यार, आपको उस पिच पे एक्टिंग करनी है. तो मैं डायरेक्टर का भी दोष है यहाँ पे, बट लाइक आई वुड आल्सो ब्लेम विजय सेतुपति फॉर दिस की मतलब आप यू आई नो यू हैव द कैपेबिलिटी, लाइक व्हाई आरंट यू पुशिंग योरसेल्फ. तो मेरे को वो थोड़ा सा ग्राइप है उनसे. या. एंड हाउ डिड यू गाइस लाइक द सॉन्ग्स? Very forgettable. हाँ. Yeah, I मोस्टली just have that one song that's हाँ. going viral. I मेरे really को like. मेरे को एक ही कोरियोग्राफी याद है जिसमें उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग को स्काई ब्लू लाइक और वाइट हाँ किया था. वो मेरे को लगा दिस इज वेरी कूल. वो मेरे को वहां पे आई थिंक सेट डिजाइन वगैरह काफी पसंद आया था. एंड बट मैं जिसके साथ देखने गया था सेकंड टाइम, उन्होंने कहा कि यार ये गाने हिंदी में थे क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि it kind of also felt कि they were made in Tamil and then they were like badly dubbed into Hindi. तो इसमें कुछ सीन्स तमिल में शूट हुए हैं क्या? ये 2 बार शूट हुई है क्या पिक्चर? नहीं, इट ओनली इन दैट सॉन्ग जिंदा बंदा, उसमें कुछ कुछ लाइंस उन्होंने तमिल में शूट किए लाइक ताकि वो दिखा सके लाइक बीटीएस में. दैट्स इट. लाइक आई डोंट थिंक दे हैव शॉट द एंटायर मूवी ट्वाइस. हाँ हाँ, वही मेरे को एक चीज जाननी थी. एंड हाउ डिड यू गाइस लाइक दीपिका? एंड जो दीपिका का जो दीपिका का बच्चा, मैं समझ गया कि 5 साल तक जब तक नहीं होता बच्चा वो उसको हैंग नहीं कर सकते. I did not बट आप understand how. 5 साल तक लाइफ क्यों दिखा रहे हो? मैं समझ गया गाइस, इट्स ओके. मतलब लटका दो अब. I did मतलब not understand how she figured she was pregnant just by checking the वो pulse. Is that पल्स चेक actually a करके thing? पता चल गया. Is that actually a thing? I'm genuinely asking, guys. आई I don't मतलब know. और राशिका प्रधान का मतलब लाइक द ओल्ड, जब व्हेन आई सॉ हर बीइंग ओल्ड मैंने काफी मेरे को लगा व्हाई. फिर ठीक I है know लाइक. why. ऐसी क्या मजबूरी थी? The whole हाँ. time I was just questioning that how could she be an amma? She's 38 years old. Shah Rukh Khan is 60 or something. No, Yeah. but then the thing is, it wasn't very convincing in the movie also. Yes, yes.
बट आई Yes. लाइक द सिंबलिज्म दो कि क्योंकि फिल्म जन्माष्टमी पे रिलीज हुई थी, सो उनका भी, कृष्ण का भी वही मिथ है ना कि लाइक ही वाज बोर्न इन द जेल एंड ही वाज Yeah. रेज्ड बाय एवरीवन। तो वो भी एक मतलब पैरेलल हो गया रियल लाइफ के साथ, तो मेरे को काफी अच्छा लगा वो। आई आई लाइक व्हेन लाइक माइथोलॉजी से आप मसाला में बोरो करते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स वेरी वेल। I सो like how Vijay Sethupathi said मुसाफा को समोसा, कुछ तो वो करता है क्या था वो Musafa. लायन किंग रेफरेंस, हाँ, like Yeah. कुछ तो ये I was सिम्बा है so वो disappointed. Most of the people that I like in the audience did not get the reference, and I was the only one laughing. But yeah. एंड जब सांता क्लॉज आए थे, आई थिंक आप लोग सही कह रहे हो यार कि इसमें चेयर, या तो मैं बहुत लेट गया हूँ इसलिए चेयर कम हो रहा था, बट आई वाज या एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ चेयर, लाइक जैसे पठान में था। तो Did you ये watch वो it मैं- with the फर्स्ट wrong फर्स्ट crowd? वीक में, हाँ हो फर्स्ट सकता है, वीक में, 100% हो सकता हाँ है। सिंगल स्क्रीन में आपको देखनी ये वाली फिल्म है, बिकॉज मल्टीप्लेक्स में इट्स 100% डिसअपॉइंटमेंट। फिर वो वाले सवाल आते हैं कि यार यहाँ पे ना ये ना लॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं थी, यहाँ पे ये लूप होल था, अरे नहीं इसके लिए नहीं वो जब देखते ना। लाइव स्ट्रीम करता था अपना न्यूज पे, उन्होंने 2 कैमरा लगाए थे, तो मैं सोच रहा हूँ तो ये कटिंग कैसे, लाइव स्ट्रीम में कटिंग कैसे कर रहा है भाई, उन्होंने 2 कैमरा लगा, वो एक बार इसके कैमरा में देख के बात कर रहा है, एक बार हाँ, इसमें देख के बात कर रहा है, तो ऐसे हाँ, फ्लॉज जब Light दिखने लग switches. गए थे। We should also लेट्स, give a like हाँ shout out to that girl जो हमारे लाइव स्ट्रीम पे भी आई हुई है एक बार, she performed the संजीता भट्टाचार्य। संजीता, like मेरे को, हाँ संजीता was also there in the film। वो हमारी कोविड के दौरान एक लाइव स्ट्रीम में आई थी and she had done a performance जब हम म्यूजिक लाइव स्ट्रीम्स करते थे। मेरे को लगता है उन्होंने हर लेडी का एक बैक स्टोरी शूट की थी, लास्ट में सोचा हाँ एक फार्मर Hindol वाला डाल दो और एक हॉस्पिटल वाला डाल दो, उसका हाँ अपन बस फ्लैशबैक में 3-4 वो मोमेंट्स दिखा देंगे, वो पानी में डूबने वाला, बाकी हाँ थोड़ा लंबा हो रहा है कट कर दो। शूट तो उन्होंने सबका किया होगा 100%। हाँ, जैसे वो भी था ना विराज केलानी जो इन्फ्लुएंसर है, वो भी हाँ मतलब उसका, ऐसे एक फ्रेम के लिए आया फिर चला गया, मतलब फिर एंड पीपल आर सेइंग कि उसका भी सीन काट दिया। सो हाँ आई तो थिंक हाँ विराज शूट को तो भी, बहुत किया या होगा। सो Yeah, that was also there. और like लोगों के like comments देख लेते हैं। Ankush is saying the vibe in the theater was awesome, cheering and clapping. I read that in OTT there will be 30 more minutes in the movie. Very nice. मैंने पहली चीज ही लिखी हुई आती है कि Netflix has the streaming rights for हाँ this. My favorite scene, belt fight scene, camera. यार मेरे को वो एक्शन सीन बहुत अच्छा लगा था, हाईवे वाला, जहाँ पे वो हाँ बसेस वाला, वो मेरे को काफी, यार मेरे को लेटली पसंद नहीं आ रहा है एक्शन में जवान और पठान। इट्स वेरी क्रिएटिव No, एक्ट, but या तो did मैंने, you find that हाँ painful to watch the women fighting? Why is a doctor performing all those? Like she was supposed to be a doctor, right? What's Malhotra's name? Sanya सानिया Malhotra. मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा। Yeah, she's a doctor, but वो कूद रही है ट्रक पे और फिर वो झगड़ भी रही है. हाँ तो या मतलब क्या डॉक्टर लड़ाई She's नहीं करते skinned. क्या? No, no, she's left. और उन That light फीमेल behind. और फीमेल एवेंजर्स में से जब एक की डेथ होती है तो सारे वो पोत की पोकाई साथ में करने लग जाते हैं कि They moved नहीं। on so quick. She even snatched the lock. और दे आर लाइक कि ये, मैंने कहा वो मरी हुई है अभी, गाइस रुक जाओ, लाइक। एंड आई रियली लाइक द वो जो छोटा बच्चा वाला जो शाहरुख था, लाइक द 3-4-5 year old हाँ kid जो दे Yeah. हैड शोन, आई रियली उसकी थॉट कि कास्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, लाइक यू रियली कास्टिंग फील वाज, बैड फॉर हाँ, हिम। या एंड मेरे What को did you लाइक think of the monologue scene where he is talking to the audience? ही इज टॉकिंग टू अस, यस। Yeah, I thought it was very brave. Like I was like कि हाँ मेरे को नहीं लग रहा था कि ये pull off कर लेंगे ऐसी चीज. yeah So like there were a lot of things like that which I found to be very very brave in the yeah. film कि आप जब इतनी मासी पिक्चर बनाते हो तो आप अगर ये सब कर पा रहे हो as Yeah. शाहरुख खान, it was like very very cool for me. मेरे को तो मजा आया. He's Shah Yeah. Rukh Khan. Yeah, Yeah. शाहरुख इज डूइंग। मेरे को वो सीन भी बहुत अच्छा था कि जब वो बोलते हैं कि सर 10 फीट से पीछे हो जाओ, माइंस लगाई हुई है, फिर वो पत्थर फेंकता है और सब कुछ फट रहा है। संजय दत्त जब वो करता है और संजय दत्त बस मस्ती करे जा रहा है, ओनम है, मतलब वो पूरे दिन ओनम वाले मूड में था कि टुडे इज ओनम सो लेट मी जस्ट लाइक Yeah. एंजॉय। It was, संजू बाबा इज अ मूड, वो genuinely फन पार्ट था फिल्म का कि लाइक आई yeah. आई लाइक सीइंग हिम कि चलो हाँ अब कुछ तो होगा। But you know, the parts where I was cracking up the most is when Shahrukh would hug Shahrukh and say "I love you," or like they would have a scene, like an emotional scene together, and he would be Yeah. hugging himself,
and I Yeah. could not take that seriously. और No, but there was one scene where मेरे को लगा काफी अच्छी एक्टिंग की है, लाइक शाहरुख खान दी एक्टर दिखा उसमें, जब बूढ़े शाहरुख को याद आता है पूरा वो गन तो के आई हैव साउंड से उसको वो याद आता है। मेरे को सो मैंने ये हाँ प्रीएम्प्ट कर लिया था कि इसकी मिहिर वीरानी वाली याददाश्त वापस साउंड हाँ के उस साउंड से आएगी, टक से आएगी। हाँ और बट मेरा जो फेवरेट शाहरुख खान था वाज द ओल्डेस्ट शाहरुख खान इन रिगार्ड टू, एक तो मेरे को बहुत ऑथेंटिक लगा उनका लुक, एक्टिंग हाँ ऑथेंटिक लगी, सब कुछ। और वो जब वो रोते हैं उस सीन में, लाइक आई रियली लाइक्ड इट कि यार यहाँ तो खेल गए भाई ये लोग। और एक उसमें एक्शन सीन आता है कि ओल्डेस्ट शाहरुख लाइक किक्स अ गाय, वो हवा में होता है, देन द ओल्डर शाहरुख आल्सो किक्स द सेम गाय, मतलब वो हाँ डबलिंग करते हैं लात मारने हाँ की, वो Yeah, बहुत ज्यादा yeah. cool। तो ये चीजें मेरे को बड़ी क्रिएटिव लगी। हिंडोल, इज इट बिकॉज हमने शायद लेसर साउथ फिल्म्स देखी है कि हमें ये एक्शन पसंद आ रहा है, या हाँ इन जनरल इट इज लाइक वेरी गुड एक्शन? नहीं, सो दे आर वेरी इन्वेंटिव ऑब्वियसली, क्योंकि उनका बार हाँ ऑफ एक्शन यही, क्योंकि वो हर हफ्ते यही देखते हैं। तो भाई आई थिंक जो लोग मतलब सेटमैक्स और गोल्डमैन टेलीफिल्म से थोड़ा यूज टू है, उनके लिए जवान कुछ खास नहीं लगेगी। दे लाइक हाँ ठीक है, वी हैव सीन दिस शिट। बट लाइक पीपल हु आर्ट वेरी लाइक, जो अभी पुष्पा देख रहे हैं, अभी केजीएफ देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये होगा कि हाँ भाई कुछ तो इन्वेंटिव हुआ है। बट लाइक या इट इज क्रिएटिव नॉनदलेस। इट इज स्टिल, या हाँ लाइक या क्रिएटिव एक लेवल पे। बट मेरे को ये लगा जवान ने मेरा डोपामीन कभी नीचे आने ही नहीं दिया। हर, हाँ जैसे आपने कहा 5 मिनट में कुछ हो रहा है, या बहुत ही जेंजी ट्रेंड पिक्चर है या ये, वो जैसे रॉकी एंड रानी थी ना, आपको हाँ मतलब पूरे टाइम ही पीक पे रखा है। वो डल राइट मोमेंट मेरे लिए एक आया था जब उस बच्चे को 5 साल का होते हुए दिखाया, मैंने ठीक है हो जाएगा 5 का जल्दी से। दैट वाज माय ओनली डल मोमेंट इन द फिल्म, बट आई थिंक वो दीपिका को और लाइक सीन्स देने के लिए उन्होंने वो रखा होगा। बट इन जनरल आई लाइक द फिल्म। आई थिंक ऐसा लग रहा होगा आई एम बीइंग टू हार्श ऑन इट, बट मेरे को मजा आया। बट मेरे को वो चीज से बहुत गुस्सा आया कि ये बाप बेटे कैसे हैं। मैं इतना कंफ्यूज था ना इंटरमिशन से पहले तक, ये कौन है, ये कौन है। एंड देन लाइक ध्रुव केप्ट टेलिंग मी उसका पापा है। मैंने कहा कैसे, पापा तो यही था। बट लाइक इसने अरे उसने मास्क उतारा था, तो मैंने कहा वो तो उतना ही बुड्ढा निकला था ना मास्क उतार के, तो इट मींस कि ही इज द सेम पर्सन। मेरे लिए रिवील ये था कि मास्क उतार के वो उतना ही बुड्ढा है, तो ये वही बंदा है। मेरे को कभी समझ ही नहीं आया कि मास्क उतारने का मतलब ये अच्छा भी यंग हो गया। एंड इट वाज वेरी बैडली डीएज। पता है बेटर कॉल सॉल में एक चीज बोली जाती है कि दे नेवर डीएज देयर एक्टर, और इसमें मेरे को डीएजिंग दिख रही थी कि शाहरुख के फेस पे डीएजिंग की हुई है बहुत Did जगह। they put a filter on his face? या देयर वाज अ फिल्टर ऑन इट, पूरा मैं बता स्मूथ सकता कर हूँ। देते हैं। अरे वो हाँ लागोस फिल्टर लगाया था यार उन्होंने, वो इंस्टाग्राम वाला, मतलब देयर वाज समथिंग देयर। Yeah, especially and his scenes with the kid. I यस, know they were trying to be cute, but that was so. उसमें ओके, आई एम particularly पर्सनली, ये मेरा पर्सनल गुस्सा है जो मैं भी निकालना चाहता हूँ। आई एम डन विद सीइंग ओवर स्मार्ट किड्स ऑन स्क्रीन। कैन वी Yeah. प्लीज हैव Same. लाइक थोड़े या, नॉर्मल बच्चे देखने को मिल सकते हैं क्या प्लीज? मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि और प्लीज वो थोड़े ऐसे नॉर्मल बच्चे जेल के निकलो। अंदर से हाथ निकाल के थम्स अप और पता नहीं क्या तो चल रहा था। हाँ बट आई रियली लाइक हाउ शाहरुख खान डिड लाइक पुश अप्स ऑन 2 फिंगर्स। वो काफी रियल लगा मेरे को कि ऐसे यार ये तो कर रहा है यार, ये तो मतलब इसने पुल ऑफ कर लिया। तो दैट वाज देयर। और बताओ गाइस, और क्या हमें जवान के बारे में बात करनी है? 180 पीपल आर वाचिंग इट। प्लीज आल्सो टॉक अबाउट किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। धीरे धीरे गाइस, धीरे धीरे। केशव, and also shout out to Anirudh Ravichandar, the man who या carried this film on his shoulders single-handedly. अगर यार मेरे BGM को, तो ये फिल्म गिर जाती पूरी। बट यार हिंडोल मेरे को बहुत ही फॉरगेटेबल लगा। मतलब जैसे विक्रम का मेरे को आज तक याद हाँ है साउंड, मतलब पीछे का बैकग्राउंड बीजीएम, इसका मेरे को बीजीएम हाँ याद ही नहीं। बट द थिंग इज, अगर आपने विक्रम नहीं देखी होती देन यू वुड हैव रिमेंबर्ड दिस। इन कंपैरिजन टू विक्रम दिस इज लाइक अ आई माइनर वर्क, डोंट, बट दिस लाइक ये फिल्म आप बिना म्यूजिक के देखो, यू विल रियलाइज हाउ नहीं यार, वानी वानी इज शेकिंग हर हेड लाइक अ लॉट। बताओ वानी। I नहीं ना, disagree. I did not like the music one bit. नोटिस ही That's नहीं हुआ यार one मेरे of को my तो। passions, it Bollywood ka it it music. did it it And did it's its job. I would disappointing. like to disagree. Yeah, it did its job, but it's very forgettable. It's Yeah, just it like is snacks forgettable, but चाहिए आपको. हाँ 'Cause पाँच बजे विक्रम चाय का, के साथ आपको समोसा खाना है. This is yeah samosa for you. It's not the yeah pakoda that will take your breath away. और विक्रम का बीजीएम अनफॉरगेटेबल है मेरे हिसाब से। हाँ मैं अभी भी बहुत ज्यादा सुनता हूँ। yeah या Yeah. क्या हुआ, क्या हुआ? I saw Disha's reaction to my comment. I was trying to follow along with her samosa pakora. Yeah. हाँ, सो एंड एनीथिंग। और मेरे को ये भी लगा, मेरे को मतलब फील नहीं हुआ कि मैं 3 घंटे बैठा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हाँ बहुत फास्ट फास्ट एक्शन सीक्वेंसेस आ रहे थे।
So Yeah. that was also there. But I found it very cute कि जेल के अंदर डांस हो रहे, अच्छा अब रात हो गई, मतलब उन्होंने जेल को कैसे एक्सप्लॉइट किया था. You know, the funniest thing to me was कि वो जेल का कोई भी सीन दिखा रहे थे, उसमें जो औरतें अंदर लॉक्ड है, खुद ही करके वो Yeah. खुद लॉक हो रही थी, और फिर वो तालियां, ये मतलब ताली नहीं, सॉरी, वो क्या होता है, थाली, Uh-huh. थाली वो बजा रही थी, एंड ऑल द थालीज वर सो फ्रेश एंड न्यू. Yeah. Yeah. The most unrealistic part of Yeah. मैं थोड़ा And वहां पे everyone was happy in jail यार, ये मतलब ये yeah. कौन सा शॉशैंक रिडेम्पशन चल रहा है, सब लोग और खुश है. और मैं सोच रहा तो था मेरे को भी ये जेल सब जाना है यार ऐसे तो. सब टेक्स्ट क्या हो रहे हैं इस पिक्चर में, क्या ये थाली बजाने वाले कोविड के ऊपर रिमार्क है जब हम थाली बजाते थे. पता नहीं, मैं तो कुछ तो चला गया था वहां पे कि ये कुछ करने की कोशिश की क्या इन्होंने वहां पे. Yeah. तो Vikram and Jailer had the best BGM in recent times. Yeah, there was a super chat that I missed. Keshav ki, thanks for getting Gaurav Kapoor. How was the experience? It was great. Like he's such an intelligent man, यार. बहुत सही बंदे हैं वो. So you guys should definitely watch that वो episode. Who is playing emoji with me? ये क्या है मैं समझा नहीं. And Sanjay Dutt should have been the villain instead of Vijay. क्या कहते हो guys इस बारे में? बट अभी That लाइक works. साउथ में संजय दत्त का प्रकाश राज हीरा स्टार्ट हो गया. ही इज द विलन इन एवरी मूवी आफ्टर केजीएफ. अभी लियो में भी वो मेन विलन है, एंड उसके बाद वो बहुत सारी फिल्मों में. सो आई थिंक पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ हिम. बट लाइक या उसमें भी द ट्रिक इज टू प्रेजेंट हिम इंटरेस्टिंग. लाइक वाइल शमशेरा वाज नॉट दैट ग्रेट अ फिल्म, इट डिड हैव अ संजय दत्त हैविंग फन विद द रोल. तो ही वाज लाइक द ओनली गुड थिंग अबाउट दैट फिल्म आल्सो. सो या मेरे को वो बहुत उनका लीड एक्टर का क्या नाम है जो लीड फीमेल एक्टर थी जवान में जो नयनतारा. Nayanthara? I didn't like her one bit. I was so indifferent towards her existence and her presence in the movie. मैंने कहा मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है. मतलब उनको बस अच्छे कपड़े पहनाए थे पूरी पिक्चर में, और मैंने कि लाइक मेरे को कहीं ऐसे फील नहीं हुआ कि ओ मैन. और उनको ऐसा कैरेक्टर भी नहीं दिया इतना पूरी पिक्चर में कि ओके दिस इज व्हाई आई शुड रूट फॉर हर. लाइक वो मेरे को थोड़ा लगा I was just जैसे really happy that it was an age appropriate heroine for once. Like, well, they looked good together. true. हाँ But what was his age is the question. Age appropriate गाइस तो है. आपको क्या लगता है जो यंगेस्ट द शाहरुख दिखाया है पिक्चर में नहीं वो तो 3 साल का था जो जो नयनतारा के साथ जो हमारे जो थे शाहरुख, उनकी एज क्या लगी आपको? मेरे को लगा ही वाज 42. दिस इज No, this is like जैसे वो सूर्यवंशम में भी था ना कि बूढ़े अमिताभ तो बूढ़े लग रहे थे, बट द यंग अमिताभ इज आल्सो लुकिंग ओल्ड. वो 50 साल के लग रहे. तो इट वाज द सेम प्रॉब्लम आई गेस. देयर इज दिस लाइन अबाउट दिस एक्टर ना कि वो हमेशा एक ही एज लगते हैं. हिंडोल हमने बात भी की थी कि कोई एक है हमारे एक वन ऑफ दोस एक्टर्स जो आप ऐसे बहुत सारी पिक्चर में I देखते feel हैं. like Paul Rudd is one of those. हाँ मतलब हॉलीवुड में there's Him. Paul Rudd. He's so Paul- pretty. That is so good looking and nice. या इंडिया में Paul- एक ही अंकल जी थे जो हमें शुरू से लेकर एंड तक 70 के थे. तो हाँ, इवन व्हेन ही when- स्टार्टेड हिज करियर ही वाज 70. हाँ, Panish is saying he was 30. It was mentioned in the movie as I like. Was okay. See, हाँ आई that थिंक is- वो I can still buy मैरिज that. प्रपोजल वाले सीन में था. Oh, हाँ. Yeah. हाँ. और वो I also think they really underutilized Sunil Grover in this. Very मतलब खेल नहीं पाए वो सुनील ग्रोवर के साथ जितना खेलना चाहिए था. It was a waste of his time. हाँ मतलब वो ये है कि मेरे को लग रहा है बहुत लोगों ने इस पिक्चर को हाँ बोला बिकॉज शाहरुख वाज देयर. जैसे सानिया मल्होत्रा का मेरे को डेफिनेटली लगता है, अदरवाइज शी इज मच बिगर देन द अदर एक्टर्स ओवर देयर एंड आई वाज लाइक व्हाई शी डूइंग दिस. एंड मेरे को ये लगा कि मे बी बिकॉज शाहरुख वाज देयर दैट इज व्हाई शी वुड हैव सेड यस टू इट. रसिका मदान ने भी वो क्या नाम है उनका? रिद्धि डोगरा. हाँ रिद्धि डोगरा. ओह यस दे लुक सिमिलर. नो आई डोंट Yeah, I thought it was her. हाँ रिद्धि डोगरा का भी मेरे को लगा कि क्या मैन कि सेइंग यस बिकॉज ऑफ दैट. और ध्रुव ने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि शाहरुख रियली वांट्स टू गेट द लाइक क्या बोलते हैं डुप्लीकेट्स राइट. पहले तो उन्होंने फैन करी उस डुप्लीकेट मूवी करी कि ही इज लाइक एक बार तो मेरे को लैंड कराना है लाइफ में डुअल रोल. बिकॉज द डबल रोल थिंग इज अ वेरी लाइक पॉपुलर ट्रोप इन साउथ ही कि हर हीरो जीवन में एक बार डबल रोल नहीं तो ट्रिपल रोल अटेम्प्ट करता ही है. सो इट्स लाइक आल्सो वैनिटी थिंग नो कि हु इज माय बिगेस्ट कंपटीशन मी. तो वो भी एक चीज है.
That Yeah. makes sense. So 180 people are watching us. How many likes do we have? We have 77 likes. Oh God, guys, please like कर दो यार, आपके लिए हर महीने ये हम स्ट्रीम्स कर रहे हैं. गाइज मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगले महीने हमारा अक्टूबर होगा, फिर बेस्ट ऑफ नवंबर होगा, तो मेरे को लगता है हमारा बेस्ट ऑफ दिसंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर बेस्ट ऑफ 2023 होगा, राइट? The stream we do Hmm. towards the end of December, Hmm. that would be Hmm. best of 2023 ना. Yeah. Last Hmm. year वानी और मैंने शायद यही किया था, मेरे को जो था हम चारों थे, I don't मतलब किया तो था ये, मेरे को याद है. The four of Hmm. us did the 100K stream together. I think that was around, was that December? वो That was in नवंबर में Jan था. only. हाँ. हाँ, वो हमने नवंबर अक्टूबर में किया था. हाँ. Also I got to know, मैं भूल गया था, but 10th अक्टूबर को चलचित्र टॉक्स को 5 साल हो जाएंगे. So Nice. it is going to be very cool. Yeah. Fifth, like guys, like note color date, 10th of October, and yeah. तो Now अब we can. चलचित्र 5 साल का हो गया तो किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी. It is the law. So अब मेरे को बताइए guys कि my review Jawan was this. They added some TikTok slow mo. There is no story. Guys, Slow but mo. like after our discussion of Rocky and Rani and even Jawan today, I am getting this feeling that we are making too many excuses for Bollywood films lately, and we are not holding them to high standards. Like we've seen Chak De also, right? How are we love Shah Rukh Khan. I love Shah Rukh Khan. Okay, I am a fan. I want to begin with that, but Hmm. can that not get in the way of us holding Bollywood to better standards? Because I don't know what is I the. want to know what Vaani and Hindol think about this. I mean, we are see हम हर फिल्म को तो रेकमेंड नहीं कर रहे ना. हम लाइगर आती है तो लाइगर को नहीं रेकमेंड कर रहे ना. सो अगेन मसाला फिल्म एंड मास फिल्म में एक बहुत डिफरेंस होता है. एंड अभी भारद्वाज रंगन का एक आर्टिकल आया था वेर ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो Oh, please मसाला tell फिल्म. me. Yeah. So masala filmmaking is what we do in Indian cinema, where like there is some emotion, there is a drop, फिर वापस build होता है, फिर एक parallel बनता है. Like it's a proper storytelling. Mass filmmaking is just one dopamine high after another. कि you have come to watch this movie because of Shah Rukh Khan and like whatever Kamal Hassan, Rajnikant, whoever, and you are just there for fan service. That's all that you don't care about the movie. You don't care about like क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. So Jawan is a mass film. चक दे इंडिया लाइक वाइल इट इज अ ग्रेट फिल्म, इट इज अ मसाला फिल्म. कि उसमें आपको एक पूरा हाई मिलता है, आपको पूरा एक जर्नी मिलती है कि ये एक टीम में अंडरडॉग है, ये लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पूरा आपको वो मिलता है, राइट? सो आई गेस यू कांट कंपेयर लाइक बोथ ऑफ Oh, देम. so को basic. कंपेयर करना अनफेयर है. So ये you are उनका saying one क्या. should, like what Mr. Rangan also said, is one should make a masala film, not a mass film. नो, यू कैन मेक वट एवर यू नहीं वॉन्ट नहीं, but क्योंकि हाँ. ideally, हाँ. मतलब in regards to arts and हाँ. if you want to do राइट it राइट. right, masala हाँ. film would hold या. a higher place in the Right. hierarchy. Yeah, because Yeah. it takes much more effort to write a good masala film. For example, Pathan is a masala film क्योंकि उसमें parallels हैं, उसमें वो पूरा एक build होता है कि हाँ ये गद्दार है, फिर वो पूरा उसका payback आता है. So it's a masala film. जवान is a mass film कि उसमें सिर्फ टिकटॉक है, पर हर 5 मिनट में कुछ चेंज हो रहा है. No, And like but is it not possible to make good enjoy. mass films? It is Shivaji the Boss is a good mass film. It is a good masala film also. Like कुछ फिल्म होती है जो Venn diagram के बीच में भी आती है, तो वो Yeah. भी होता है. Yeah. So I guess So that is what I was trying to ask you. Are we not yeah, demanding good mass films anymore? Like if you Hmm. I think अभी तो सीखे हैं यार ये लोग, मतलब so one thing that we need to understand is that we had forgotten, like we had abandoned our own filmmaking for a very long time, right? हम वही छोटे शहरों वाली फिल्में बना रहे थे. Not that there's anything wrong with it, but like that was the trend, and अब जाके like these films are coming back. So I guess like over the next 1 or 2 years, let's say Gadar 2 चल गई. Now it's not a comment on like what the quality of that film is, but it is a mass film. People enjoyed it. तो अब वो फिल्में धीरे धीरे और बनना लगेंगी. Now we don't know if they'll be good or not, but like that is the trend अभी. कितनी कूल चीज बताई यार हिंडल, ये तो मेरे को मतलब मजा आ गया सुन के कि मतलब I learned something new today. I'm going to read this. Yeah, मतलब इन I'll मतलब try ये and इन्हीं का is he the main, मतलब ये इनका yeah, आइडिया है क्या उन्होंने मसाला लिखा और है. मास? हाँ, like the definition that he is presented is something that like it is agreeable. मतलब वाओ काफी यार. अच्छा उन्होंने distinction दिया है. So when Yeah. even when he reviews a film, like when he reviews a mass film, he is reviewing it on the standards of a mass film.
तो दैट्स अ फेयर Hmm. कंपैरिजन नो, मतलब आई कैन कंपेयर इट विद अ रजनीकांत मूवी कि हाँ ओके डज इट होल्ड अप और नॉट, क्या बीट्स अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बट अगर मसाला में जाऊँ तो फिर इतना अच्छा काम ऑलरेडी हो रखा है, तो देन आई विल होल्ड इट अप टू दैट स्टैंडर्ड. Got it. Guys, 202 people are watching us now. क्या बात है, कितने लाइक हो गए, ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात हो गई. So Yeah. tell me the number of likes, guys. 103 likes. So guys, we need 100 more likes. 200 लोग देख रहे हैं तो 200 लोग प्लीज लाइक कर दीजिए इस चीज को. एंड वुड यू गाइस कॉल, चैट में भी बताइए, रॉकी एंड Hmm. रानी टू बी अ मसाला फिल्म और अ मास फिल्म? Hmm. बताओ, यहाँ पे आप लोग भी बताओ. हाँ, I would call it a मसाला फिल्म because it has like your typical जो आपके tropes होते हैं सारे मसाला फिल्म वाले, कि एक फैमिली है, बिछड़ना, फिर फैमिली वैल्यूज. आप कह रहे हो व्हेन यू डू मास फिल्म राइट इट बिकम्स अ मसाला फिल्म हाँ इन अ मतलब वे. a mass. हाँ हाँ, like if there is more subtext to a mass film then it becomes a मसाला film. या वैसे या तो लाइक सलमान खान की सारी फिल्में मास फिल्म है, दे आर नॉट मसाला नॉट फिल्म लाइक. सारी, अब उसमें भी मतलब वो है रिसेंट जैसे. वाली जो है. What is हाँ, Dabang? Dabang is a good masala film. Dabang is one of हाँ. the last great masala films that we had because उसमें आप पूरा देखो ना, उसके एक भाई है, भाई के साथ टशन है, मॉम के साथ वो है, पूरा एक उसमें वो है कि the way the mom dies is also the exact same way the villain dies. तो वो सारे parallels हैं, तो it's like very nuanced writing. मतलब not that anyone is caring for nuance in Dabang but like है उसमें nuance. तो yeah. Hmm. So let's discuss more things, guys. I also have to leave in a bit. तो एक बार हम ओवरऑल लाइक कर लेते हैं. हाँ. मेरे को एक पिक्चर की बहुत ज्यादा बात करनी है. I know Vaani has seen it. Hindol has also seen Past Lives. Disha, have you seen Past Lives? No. You must. So let me do a quick. मैंने बात नहीं की चैनल पे अभी तक पास्ट लाइव्स के बारे में. मेरे को ऑलरेडी पता था व्हाट स्टार्ट पिक्चर है, बट आई थिंक आई वाज दैट पर्सन जो उन्होंने पहले 1 मिनट में ही दिखा दिया कि लोग जब एक लाइक दूसरे पीओवी से देख रहे हैं तो उन तीन लोगों के बीच में क्या चल रहा है. तो मेरे को ये ट्रेलर वगैरह देख के चला था कि ये एक टाइप की स्टोरी होगी, एंड इट वाज नॉट दैट स्टोरी. सो लोग कह रहे हैं कि इट्स अ वॉकिंग एंड टॉकिंग और ये बिफोर सनराइज है. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिल्म. And to fully appreciate like past lives, I think it goes hand in hand with the review Rahul Desai has written, and I think it might be the best thing he has written, because उससे पहले उन्होंने आफ्टर सन का ग्रेट रिव्यू लिखा था, and I told him कि I think you have outdone yourself, and he also said कि this time I also feel I have done something very very nice. And उन्होंने खुद भी लिखा है कि I feel really proud of the review because it's an art piece. So पास्ट लाइव्स के बारे में आई थिंक अभी लाइक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है कहीं, तो मैं आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, बट regardless of your relationship status, I think I was particularly interested in seeing how married people feel about it. So I've been doing a lot of surveys, particularly females who are married. मैं काफी लोगों से बात करी उन कि how do you feel about this film, and सबके बहुत interesting insights हैं इस फिल्म को लेके कि genuinely like आप like अपने घर वालों को दिखाओगे, they might feel certain ways about it, and some friend of yours who just got recently married. मेरे को बहुत मजा आ रहा था इस चीज में जानने में कि ओके हाउ डू यू फील अबाउट इट, क्योंकि आई हैव सीन दी नॉन मैरिड वाली जो लव स्टोरीज होती है, द बिफोर सनराइज एंड ऑल दोस फिल्म्स, बट ये थोड़ी डिफरेंट है. एंड I don't know. I just want to tell you guys it's a great film, and I am being very reserved right now because I don't want to reveal a lot about the film. I also don't want to ruin anyone's or Disha's experience of watching the film for the first time. But it deserves a discussion of its own, and it's one of those films which makes you think about like the decisions you take in your life. And uh, past lives का concept भी यही है कि every person you get married to or like you just like brush your shoulders with, you have a past life with that person. ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप भीड़ में से जा रहे हो और आप लाइक शोल्डर भी ब्रश होते हैं तो यू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. सो बहुत प्यारा लगा मेरे को, बहुत प्यारी पिक्चर लगी. And we will talk about it once more people have seen it and once it's officially available. So that is one thing I wanted to talk about in regard to movies and books. I watched Guide for the first time and it blew my mind.
I was feeling very very anxious before like मैं 6 बजे का एक शो था and मैंने पोल किया था कि ज्वेल थीफ देखूं या गाइड देखूं मूवी क्लब में and everyone said ज्वेल थीफ तो मैं गाइड देखने चला गया so I don't know why I did that but I thought कि वह anyway पुरानी पिक्चर है तो तू कूल देखने के कूल लगने के लिए ऐसे और इंडी मत जा पहले एक्सेसिबल पिक्चर देख ले and everything like blew my mind about that film everything क्योंकि आई डोंट नो यार मतलब एक तो मेरे को उसका डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगा एंड आई थिंक इट वाज आल्सो रिव्यूड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स और समथिंग मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पैरेलली रिसर्च भी कर रहा था एंड द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म ब्लू मी अवे आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट देवानंद फिल्म guide and I loved the husband wife dynamic of a toxic relationship that they had shown कि मैंने कहा ये कैसे कर रहे हैं like how the female stands up to the husband who thinks that like the female should like just cook rotis and stuff and how she stands up to him and then I like how the film suddenly becomes La La Land कि मतलब like it becomes so dark it becomes about a dysfunctional relationship where the characters are saying मैंने आज एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी मूवी पे आएगी पैसेंजर्स है उसका नाम the person says ki I'm not interested in you anymore and I think it is one of the rudest thing you can say to a person you are ending relationship with I I am not interested in you anymore and something like this was also said in Guide where like the guy is trying to like cuddle her and like and she says कि नहीं यार मतलब I don't feel that way for you anymore तो मैं तो anyway dysfunctional relationships को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा से interested रहा हूँ and guide did it brilliantly लास्ट के 20 मिनट थोड़ा छोटा कर सकते थे 100% छोटा कर सकते थे वो मेरे को लगा थोड़ा खींचा है वहाँ पे उन्होंने particularly जब the fast starts but it like made me cry it made me feel and क्या एक्सपीरियंस था पूरा इंडिया लाइक देवानंद जाके देख रहा है हॉल में एवरी पर्सन वाज 40 प्लस दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स मेरे को पता नहीं था कि जो सारे गाने गाइड अच्छा ये भी गाइड कर ये भी गाइड कर ये भी गाइड कर ये तो मैंने सुना ये तो सुना है सो आई जस्ट लाइक न्यू नथिंग अबाउट द फिल्म मेरे को लगा फना टाइप कोई पिक्चर होगी कि उसमें भी गाइड था बट ये तो मैं बहुत इम्प्रेस होके आया हूँ यार लाइक दैट वाज देयर I am really sorry. I know आप लोगों को भी बोलना there is a big like super chat जो आई थी कहाँ गई साइनाथ की एक super chat आई थी he had given a $10 super chat I don't know if you guys can see it अभी मेरे को नोना की वो दिख रही है keep up the good work gang what are you looking forward to in the last 3 months of the year Nona is also a very good podcaster guys he makes film related content in fact I've also done a podcast on his channel so you should see it एंड इफ यू गाइस सी द सुपर चैट मेरे को बताना बट ये मेरे को 3 चीजों की बात करनी थी गाइड की पास्ट लाइफ्स की एंड द फिल्म आई वॉच टुडे जवान आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट फर्जी बट आई थिंक इट कैन वेट ओवर टू यू गाइस I'll start with I want to talk about past lives. So Rahul Desai ka in the blog. I think if you haven't, I mean, of course, read it after you're done watching the film. But there's a line in the blog that was so good, and I just want to read it out for everybody. And in case you are, agar aapki, where did you watch it, Vaibhav? By the way, the Past Lives movie. Where did you watch Please it? continue. I'm just asking, where did you? Oh, got it. Sorry, but if you get a chance to watch the movie, please watch it. And there's this line that I want to read from Rahul Desai's blog because I think that summed up the entire movie, and I won't even be giving you guys any spoilers. And if you guys have seen, what's the movie that you had seen, Hindol Abhi, which I had pushed you to watch? Eternal Sunshine. Yes, and if you've seen Eternal Sunshine, you'll also get the context. It goes, our Montauk isn't about remembering the past, it's about renewing our romance with the future. Soulmates don't dream in the same language, they exist in a shared language. After all, aspiring to live is the epilogue of living to aspire. And I love this line so much. And Past Lives is the kind of movie, if you're still not convinced, that's the kind of movie I want to watch every time I'm sitting down to watch a movie. So if you get a chance, watch this movie. Very nicely put. Nice.
Lovely. I didn't know you read the article. I was pushing you, I think, for a while. Yeah, no, तो I read it. Yeah, I किया also made हाँ my notes. या बहुत ज़्यादा. Most of the reviews that Rahul It's Desai does. but हाँ, this one is very Yeah. special. I think I I was like real time talking to Arpit while reading it, and I'm like, bro, तू देख रहा है क्या लिखा है क्या? Like every line was like hitting me like. And then another friend of mine went to watch this film, and I said कि आपको आते ही review पढ़ना है, फिर बात करेंगे. मेरे को directly मत बताना, पहले review पढ़ के बताना. So it's the thing with good reviews. And there is a question which has come particularly for Disha. Disha, which is your favorite Vishal Bhardwaj film? Suman is asking. I guess, yeah, you put me on the spot. Does anyone else want to take this question? Mine is Dum Dum Dadam Dada Yare, guys. So yeah. Or Hindol, which is your favorite Vishal Bhardwaj film? Um, काफी है मतलब आई रियली लाइक कमीनियन बिकॉज नॉट द Hmm, मतलब शेर वाली तो है ही मतलब उनको मैं अलग रखता हूँ रैंकिंग से क्योंकि वो दे आर अ पीस ऑफ आर्ट मतलब वो क्लासिक्स में आती है बट आई yeah, रियली लाइक कमीनियन लोग उसको उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए सो yeah. What about you, Ani? Please don't put me on the spot. Okay, okay. It's मैं comedian was the first that came to my mind also, but I'm not sure. Yeah, Like I really have to think about this. But I've seen comedian was Kamine, but I can't remember anything about it except for the entry. Yeah, so I also want to say something कि अभी बहुत cool चीज़ हुई थोड़ी देर पहले. I started a new show on Kitabi Cabins called Writings on the Wall, where I would talk about the writings जो आप particularly per se किसी किताब का part नहीं है, but like that like stayed with me. So I started with this blog called Ask Polly, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जिसकी बात कर रहा हूँ. And 1 or 2 hours back, Ask Polly had followed me. एंड उन्होंने मैंने हिंदी में भी बहुत बोला है सो शी कोट रीट्वीटेड माय ट्वीट एंड रोट कि आई couldn't follow a lot of what was said in this but this is my favorite review of all time. And then she commented on the like my like video wala tweet कि Vaibhav, this made me cry. Thank you so much for such a sincere, kind reading of my words. It means a lot to me. And I'm like, dude. Like, Vaibhav, this made me cry. And I think she is a kind of a person who wouldn't lie about it. जितना मेरी रीड है कि if she कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मेरे को रोना आ गया. So because her writing it made me feel like थोड़ा teary eyed कि because I know she takes any writer takes their words very seriously. They wouldn't use any adjectives which are redundant. So it meant a lot that she wrote it. So yeah, cool sheet. Sorry. अच्छा था. एंड या अब मैं और आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ. इस महीने हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बुक का मंच पढ़ी थी जिसका नाम है आउटलिव. I can't stress enough how important it is for every living being to read that book. I think you'll start imagining life in a very different way. I have started taking my watch more seriously. I've started taking my sleep more seriously. I've started like putting more focus on all departments of health, cardio, weight training, emotional health. तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है वो. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी पर्सन who read the book along with us, and we are also going to have a discussion related to it. So, and Vaani is also going to reveal the book for the month of October tomorrow. So yeah, Hindol and Disha, if you guys haven't read Outlive, I would like tell you if there is one book you should read in life, it is Outlive. Because not because मेरे को बहुत पसंद आई, because you'll thank me for your lives कि health को we were thinking of health very wrongly, and that is what the book says कि medicine 2.0 is over. It's time to think about medicine in a different way. So you should and you must read Outlive. And Uma has written Outlive is changing my life one day at a time. How lovely. And I'm yeah just guys, happy. इस महीने I went to crossword, two different crosswords in Bombay, in different areas, and दोनों जगह पे outlive रखी थी top shelf पे. तो I yeah. think से अगर कोई देख रहा है तो guys please you can just talk to us, please Yeah. email and we can figure out I mean, something है we ना. can, yeah.
We Yeah, can. because this is happening with all our AVMs कि हर महीने जो भी हम बुक पिक करते हैं वो टॉप शेल्फ पे आ जाती है magically. So yeah. Yeah. And just a gentle reminder, there is a new live stream कल दिन में होने वाला है. आप लोग प्लीज सपोर्ट करने आना. अदिति, चारू एंड पथिक are going to be doing it. उन्होंने बहुत प्यारा नाम सोचा है इसका. It's called Bookish Banters. So they will be doing a bookish banter tomorrow. There is also a super chat by Samiksha. दिशाहीन का किताबी कैबिन्स पे क्या हुआ? Disha and Hindol did a live stream very recently, and I think they have some plans to. वो आप लोग इन्हीं से पूछिए कैसे प्लान कर रहे हैं वो, but I think something is going to happen very very soon. Thank you so much, Samiksha, for your super chat. Guys, short on time, please give your recommendations. Okay, so I will quickly go through mine. Another film I watched in the theater this month is A Haunting in Venice, which I really enjoyed. I mean, it's an adaptation of Agatha Christie's one of her stories, and it was really nice. मतलब I went with someone who doesn't read her stories, so उन्हें इतनी कुछ खास नहीं लगी. But I feel like they really encapsulated her vibe very well, and there were a lot of really good actors. There was Jamie Dornan, Michelle, how do you say her last name? Yo, the one from Everywhere. हाँ, Yeah. right, Uh, समझ Hmm. गया. her Yeah. and then Tina Fey, and all of them were great. And it's a very good one-time watch, and especially if you have read Agatha Christie ever. So, बहुत मजा आया मुझे तो. And I also watched Maviran, which is a Malayalam film, and it's Tamil a film. is it हाँ, it's a Tamil film. okay? It's a Tamil Yeah. film, and I don't really care for superhero movies that much, but ये मुझे बहुत अच्छी लगी. And I know कि Vaibhav was talking about how much he enjoyed the action sequence in Jawan and how they had choreographed it. But इसमें देख के मुझे ये वाले ज़्यादा better लगे. And in general जो भी South के Okay. movies होते हैं उनमें better ही होते हैं. And उसमें एक theme जो like I picked up on, I don't know if they were pushing for it purposely, but there's this saying in Marathi, which I'm going to roughly translate for you, that says ki Shivaji must be born, but in the neighbor's house, because you don't want Hmm. that a hero has to eventually sacrifice his own life and bring misery upon his family for the good of all, right? So that is a theme that they were tinkering with in the first half of the film, which I really liked. And Maviran is actually, have you watched it, Hmm. Linda? I had recommended it last month. मेरे इसमें था best of में था list में. Nice. Yeah. That ये doesn't mean हमारा ऐसे that pattern बन गया. Like I recommend something, then 2 months later you watch it. So yeah. yeah. Story of my relationship with Vaibhav. ऐसा नहीं है यार. मेरे को एक since Jawan was mentioned, I found the amazing super chat Sainath had given us. He's also a member. I watched Jawan twice. I gave into the world of Jawan as soon as I saw the jail. All the women prisoners were wearing sneakers and cool clothes, but मजा आया. Yeah, they were wearing H&M का वो cord. Yeah, Yeah. they were. वो मतलब वो H&M is the new black वाली feels आ रही थी काफी मतलब वो देख के. But yeah, please Yes. Disha, continue. So another one of my favorite things this month was I discovered this Chrome extension, which I might be new to, but शायद सबको पता होगा. But the thing is, I do a lot of work on YouTube, and I need to be able to watch videos uninterrupted. But I get distracted because side में चीजें दिख रही है, comments दिख रहा है, home page दिख रहा है. So there's this Chrome extension called Unhook, if I'm not mistaken, just so you can hide all of that. So only you can only search for the video that you want, and फिर सिर्फ वही दिखेगा, and you can ये control YouTube पे है. This is अच्छा, this is a Chrome Chrome extension. extension. Yeah. I have like recommended a similar one for YouTube, which just so when you हाँ मतलब open it the. is for YouTube, but it is a Chrome extension. हाँ तो मतलब मैं ये 3 साल से recommend कर रहा हूँ. What is अब yours? यही होगा. अब basically सबकी आवाज लगेगा होगी. Yeah, but Uh, this is great. Yeah. yeah, and this is new for me, but I've been playing a lot of games on my phone. I don't usually play video games or anything of that sort, but there are a lot of comforting mobile बताओ phone यार, I games. really need these. ये Yeah, बताओ. there's this one called Resonance of the Ocean, और उसके graphics इतने प्यारे, it's all hand drawn and it is so cute, and all you have to, you're stuck in on an island and तुम्हें दूसरे island से आवाजें आ रही है,
and through all the objects lying on the island, you have to make that similar sound to communicate with them. And it's a very short game, but very very comforting. Or there's this one called Cats in Soup, जिसमें सिर्फ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं. You adopt them and then they make soup Mm. together. That's it. Yeah. Oh, Yeah. I've played that one. It's nice. Yeah. Yeah, it's really cute. Yeah, these are mine. I'll go next, Hindol, if you don't mind, Go for it. because I don't have a lot of recommendations. But this is the book that I had ordered 3 months ago. It's called The Hangover Cookbook. I think I'll have to mirror it. Wait, let me mirror my frame, my video. So if you see, they've misspelled hungover as well, and it has been the highlight of my month because I've been reading every recipe. If you're a member of the book club, you'd see what the first few pages look like. This is the don't panic. Wait, why did I mirror myself again? This is don't panic, and then you have a proper consolation message that a hangover is nothing but an opportunity to kind of discover new things. And then you have a lot of recipes. Oh, before you get into the recipes, the book will diagnose you to see how. I don't really drink a lot. It's just a very interesting book. Just putting it out there. So there are a lot of tests that will help you diagnose what your skills, what par your skills are at in the present. Basically, how drunk are you? How much you can basically handle right now. So, and then every recipe will have different ratings. For example, there is the difficulty rating. How difficult will it be to make the dish? And then you have the time that will take based on your hangover. So it's a very, very interesting book and with beautiful, beautiful graphics. And Beach May, time and again, you'll get some really nice, interesting quotes from some eminent personalities of the past to keep you motivated. So I think this is one of the finest coffee table books I've bought in a while. So this is my recommendation. I mean, abhi ye jaldi ship ho rahi hai. When I ordered it now, I got it after 2 months. So that's Lovely. my This is great. Thanks. recommendation. I think Disha and Vani have given their recommendations. Hindol, over to you. हाँ एक चैट इफ यू कैन हाईलाइटेड द नर्डी वन काफ़ी टाइम से चैट भेज रहे हैं तो उन्होंने मांगास रेकमेंड किए हम सबके हाँ. लिए सो इफ यू कैन हाँ सो ही हैज रेकमेंडेड फॉर एवरीवन आई वांट टू नो लाइक ऑन व्हाट बेसिस यू I रेकमेंडेड have seen the anime of the one that he has recommended for me, I think. Oh, nice. Oh. Ao Haru, right. For Disha, Blood on the Tracks for Vaibhav, Silver Spoon for Vaani, Vagabond for Hindol. Thank you, the nerdy one, for recommending these. I will definitely try Is and it read this. after doing our character analysis? I'm just Yeah, yeah. I'm कुछ तो उन्होंने genuinely हाँ curious. basis लगाया है, but yeah. Thank you. I would really like to know that. Yeah. Yeah. But Yeah. So, so this month I haven't watched anything. I literally watched nothing except of Jawan and one movie that in good conscience I can't recommend क्योंकि it did not release legally. I know काफी लोग chat में बात करना चाहते हैं उस फिल्म की, but I don't think it's fair to talk about it because it's not legally that we've watched it, है yeah, ना? so डुंकी बहुत पसंद आई है हिंडोल को. हाँ और हाँ मुन्ना भाई 3 बहुत अच्छी लगी मुझे. फर्स्ट हाफ उसका अच्छा है, सेकंड हाफ बेकार है. so बट is यार it हर डुंकी और डंकी? डंकी है. If it's अच्छा ये डोंकी donkey वाला ही food, डोंकी है क्या? हाँ हाँ डोंकी वर्ड से ही डंकी निकला but है. its donuts Because also have donkeys, no? So I don't think it should be. good so yeah, I just have one recommendation this month and normally Disha product recommendation देती है, but this time I have a product Comment भी आया एक, recommendation. they are asking for हाँ it. हाँ. Huh. Yeah. So I fell sick last week and had a very bad throat, and I tried everything. It didn't work. And this sounds like an endorsement, but this is a genuine endorsement. मैंने निकाल के रखा है. So this is Dabur Hanitas का काढ़ा, if you can see. तो अगर आप इसमें ऐसे पाउच आती है तो आप एक पाउच को पानी में डालो तो इसमें 4 बची हुई है. तो इससे काफ़ी फायदा होता है. तो and this really worked. This has helped me cure my cough. तो ये Great. काफ़ी अच्छा है. Uh, And yeah, that is my yeah. recommendation. Disha, like quickly, I only have like 90 more seconds. Like product recommendation.
Okay, I have a pen that I can recommend. I didn't have any this ready, but मुझे लग रहा है यार तुम में से किसी ने already recommend कर दिया होगा. I'm getting conscious now. नहीं नहीं अच्छा है ना लाइक वी अभी सब एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं इट्स ओके इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ आपको बोल रहे हो या Yeah, I can't find it. I have a Pikachu eraser that I recommend. आपको पता है मैं कब से रिकवर सॉरी We do it. काफी कूल चलो देयर इज अ सुपर चैट बाय अने आल्सो हैव यू सीन एनिमल ओके लास्ट एनिमल टीजर के बारे में बात करते हैं लेट्स हैव द लेडीज गो फर्स्ट पहले आप लोग बताइए I'm actively avoiding it because I just want to go watch the movie. ओके Nice. दिशा I didn't. I mean, I'm excited. I feel like I'm going to get let down. So कुछ ऐसे special thoughts नहीं है. रणबीर कपूर इतना अजीब क्यों लग रहा है? सॉरी हिंडोल Does he really look that हाँ, bad? It ये just अच्छा seems तो लग रहा है. implied. I mean, I don't know उसके बाल का कुछ किया like just. या That's him ओके playing. ओके बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो गई है ना कैमरास की. You can actually see your actors in HD and I don't think I'm coping well with that. Oh God. Okay. Yeah. But yeah, Okay, I okay. would rather take imperfections than like a smoothened out Shah Rukh Khan, जिसकी आप Yeah, age I नहीं. don't know what they were trying to do. There are वो मेरा women, 15-year-olds on Instagram doing a better job at Photoshop and whatnot than yeah You have ये no idea. yeah Hindal what did you think of like the teaser I liked it. I'm looking forward to the film, and December में release हो रही है, so and it's releasing before my birthday, so like I will definitely yeah watch it. and Yay. quick word about like animal teaser from my end also I really like the teaser and I think मैंने अभी एक इंस्टा ब्राउजर पोस्ट like बनाई थी in regard to the मैंने curate की थी कि the greatest teasers ever made तो it has all the teaser beats right कि कैसे आपको थोड़ा सा हुक करना है ज्यादा बताना भी नहीं है कैसे म्यूजिक प्ले करना है कैसे आप लाइक साउंड डिजाइन को म्यूजिक में कन्वर्ट कर रहे हो आई रियली लव लाइक व्हेन पीपल डू दैट सो मेरे को तो एनिमल टीजर पसंद आया अगेन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक इन द इवेंचुअल मूवी बट इन रिगार्ड टू जस्ट लाइक द मास्टर लाइक द आर्ट पीस अगर मैं स्टैंड अलोन देखूं it worked like really well for me so Yeah. बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को and yeah guys thank you so much for joining and I also had one more recommendation मैंने मेरे notion पे नहीं लिखी because I didn't get the time I attended my first ever boiler room yesterday and मेरे ऐसे कुछ life में check marks है कि जो करने हैं particularly related to electronic music and मैंने कल attend किया and I think I'm never going to forget the experience because in fact nuclear का जो boiler room है उसमें आप लोग मेरे को ऐसे spot कर सकते हो पीछे audience में so मैं 5 मिनट के लिए लेके आता हूँ बहुत last में but Prabdeep also performed it happened in Delhi and if you are into अभी I think Bangalore और मुंबई में होने वाला है boiler room so yeah you guys should definitely check it out so yes, this was great. So good to see Amir Khan like in chat. Amir Khan बहुत गंदे comments करता है हमारे सारे videos पे. So consistently मेरे को 2-3 लोगों के नाम पता है like who always like make bad comments on our videos. So yeah, great to see him. And anything do you guys want to say before we end this? Yeah, I just want to say Nightwing has said that Disha really hates Shah Rukh Khan with a passion. I just want to clear the air once and for all. That man, I have so much potential to be a super fan. I'm getting there, okay? I'm going to have someone I watch think this. in hindsight, this stream is where Disha has kind of washed away all her sins and she's redeemed herself as Thank a you. Shah Yeah, Rukh Khan supporter. that. Yeah. नहीं, we will pass the verdict only after her review of Dunki. Only in December Oh. will we approve her of as the After president I of like Shah Rukh Khan Pratibha. Fan Association. I think we should bring back the streams where we did actor discussions. Like, remember there was this dedicated stream for Shah Rukh Khan, and perhaps we can do it on Kitabi. But yeah, we should do more specific stream शाहरुख वाला तो जितनी बार भी कर लो चलेगा तो मैं मतलब कभी भी कर सकते हैं there ठीक should be है a dedicated stream for Shah Rukh, like individual every movies. We should pick up a movie and like I saw Swades last month, and I had missed out so many things.
and it's just you can't. Shah Rukh Khan. I think yeah, someone commented अभी एक recent video पे कि सुजय घोष वाले वीडियो पे शायद please get शाहरुख खान on the channel and someone commented in कि bro not possible शाहरुख खान नहीं आएगा and मैंने उसका snapshot लिया हुआ है because मेरे को जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तू ये नहीं कर सकता मेरे को बड़ा मजा आता है. I find it very cute because then I post it when it actually happens. So guys, you'll see Shahrukh Khan very soon on Chalchitra Talks and someone is very disappointed and upset with Disha because she didn't tell her favorite अभी Vishal कमीने Bhardwaj. कमीने. I just want to think about this, you know. But yeah, I have started streaming. I am going to be very punctual with this. I'm streaming Yes. on Kitabi now. It's a solo Nice. stream, but I'll be getting people. Hindol will be there more often than he wants to. Uh, Oh, so lovely. we can have a proper Vishal Bhardwaj discussion over there if that's okay, Vaani. Yeah. Yeah. Great stuff, guys. We'll end the stream now and thank you so much for joining. चलो guys, we'll see you. अगर यहाँ तक like video देखा है तो क्या hashtag दें guys? Hashtag बताओ. Pikachu. Oh yeah, good callback. The hashtag is Pikachu. You have to say Pikachu, guys. Yeah. And on that note, we will end the stream. Chalo, guys. Bye, everyone. Bye.